This call is now being recorded. Good morning. Okay. Now I'm going to start the program, please. Yes, ma'am. Good morning. Okay. Should I start? Our Banashree ma'am is here, and our CPs are also here. So we can start now. Dr. SANAT Patnaik, should I start? Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Should I start? First aid service. ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିରେ ପଡେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କିନ୍ତୁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ ହେଇଯାଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ
उपयुक्त बहुत उच्च कोटिर खाद्य रांधि ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ ର Okay, Sanat Patnaik sir, am I audible to you? I cannot audible. I cannot audible. Okay, okay. Now. No. Ma'am, I cannot audible. I cannot audible. Okay, okay. Good morning, Jai Jagannath. Good morning, ma'am. नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं त्याग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सुजन परिवृतं ब्रह्मधार्यो नमामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौड़मणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदय आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर सष्टा अखिल रसघन विग्रह विश्व वेदनार वैद्य देवाधिदेव श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे अकिंचनर कोटि कोटि प्रमाण नाम। Now we are going to start our program. Now I request our guest of honor, Mr. Soumendra Priyadarshi, the senior IPS officer and commissioner of police, to inaugurate the world first aid day. May I request वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का मतलब मनुष्य की भावनाओं को जागृत किया, उसकी भावनाओं को संवेदनशील
इंग्लिश में कौन से may I request our guest of honor, Mr. Saumendra Priyadarshi sir, please inaugurate the World First Aid Day observation by lighting the candles, sir. Ma'am audible only. ऑडिबल होने दो। It is not audible, madam.
ऑब्जर्व करने जा रहा है, स्थापित करने जा रहा है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। मनुष्य भावनाओं का समुच्चय है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे का मतलब है मनुष्य की भावनाओं को जागृत किया, उसकी भावनाओं को संवेदनशीलता में परिवर्तित कर दिया गया। हम जानते हैं कि सेवा केवल भाव से हो सकती है, वस्तुओं से नहीं हो सकती। हम ये भी जानते हैं कि all of us are angels with one wing and we can fly as high as we like provided we embrace each other. हम सभी फरिश्ते हैं और एक पंख के साथ हैं। अगर एक दूसरे का हाथ जोड़कर खड़े हो, एक दूसरे को हाथ वाली ऐसी श्रृंखला बन जाती है जो कि गर्व से भी ऊंची उड़ान कर सकता है। वर्ल्ड फर्स्ट डे के ऊपर मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी सेंट जॉन एम्बुलेंस के कार्यकर्ता हैं, और उनसे इसके नाते और भी बधाई कि वो महीने में 4 इस प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। मनुष्य की भावनाओं को जागृत कर ये एहसास कराना चाहिए, उनको अनुभव कराना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के संकट से कहीं भी ग्रस्त है। कौन है कौन कहूच सेवा के लिए कि मैं और वो एक दूसरे के साथ सारूप्य की दृष्टि से जुड़े हुए हैं और सारूप्य बनना चाहते हैं। उसका दर्द मुझे मिल जाए, उसकी पीड़ा मुझे मिल जाए, यह जो अंतःकरण का प्रेम प्रवाह है, इसको प्रवाहित करने का नाम ही जॉन एम्बुलेंस है, सेंट जॉन एम्बुलेंस है। इस अवसर पर सेंट जॉन एम्बुलेंस के सभी कार्यकर्ताओं, सभी वर्कर्स को जो कर्म यज्ञ में विश्वास करते हैं, जो कर्म योग में विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं किसी भी मनुष्य को किसी भी कोने में विश्व के भी पीड़ा से ना हो, तो उस पीड़ा को मैं सहन करूंगा। कौन मैसेज से छड़ी कोड मैसेज आसला मैडम करो काम ये राज्यम न स्वर्णम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता ना मोते सोडा कासे ने नामार्तनाश our power, our rebirth, nothing of the sort I need. I only just wish and pray to the Lord Provider that the sufferings, the agonies, the anguishes, the fevers, the frets and the fumes of the world should be put into my coffer. मेरी झोली में डाल दो, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। सेंट जॉन एम्बुलेंस इसी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है, इसी संकल्प के साथ चलते हैं। बहुत बहुत बधाई। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। Thank you, sir. Thank you very much. Now we'll get the message from our chairman, sir.
So voice is not clear and visibility also not clear. So I would like to request our chief guest, chief speaker sir, comes from the podium and deliver the talk and motivate and other things. Thank you, sir. Dr. Pattanaik को प्रथम पचारिली ओडिया रे कहले चलिबो देखो हम कल सुना जी बोलता हमको तो सब सुना जी देखो ना सुना जी वो सुनते सुना जाऊला तो हमको तो हमको सुना याद स्टाफ अछंती सर्जन एम्बुलेंस रो वॉलंटियर अछंती आपण माने जानि आश्चर्य पृथ्वी 27% लोक मृत्युवरण करिथांती इमीडिएट मेडिकल अटेंशन अभाव इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आपण माने बहुत समय रे देखिथिबे जे आजिकली व्हाट्सएप बोलुछि माने बहुत वायरल होछि व्हाट्सएप रे हार्ट अटैक हेले कोन आपण करिवे प्रथमे हार्ट अटैक रो सिम्पटम केमति जानिबे द्वितीय हार्ट अटैक हेले आपण इमीडिएटली कोन करिवे दुईटा कथा जेते बेले जने लोक टिके बयस अधिक होइछि तांकु हबो सेठी तांकु रिस्पोंड की करिवे हमर भितरु जने जे तांको कोइ पारे जे पारे पुत्रा पारे जियारी पारे जे पाखरे थिबो से रिस्पोंड करला आ से जो रिस्पांस मेकानिज्म यदि ठीक हो बहुत समय रे आमे से जीवन को मूल्यवान जीवन को बचेबे सके आ सेही टेक्निक ता जानिबा पई हमको फर्स्ट एड विषय रे ट्रेनिंग नबा अत्यंत जरूरी आ सेंट जॉन एम्बुलेंस पूरा विश्व रे ए जो ट्रेनिंग दबारे कर्णधार आजिठु साजिनी परंतु जो दिनठु हमें माने हमें जदी इतिहास नबो इतिहास कोची जे हेनरी डुना जेतेबे रेड क्रॉस बा रेड क्रिसेंट सोसाइटी कले गोटे युद्धर भयावहता को देखि कि लोक युद्ध रे इंजर्ड होछंती ताको केमिति ताको जीवन बचा जाय परिबो एटा होते 1869 मसिया माने से दिनठु जो करा जायतिला इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी रेड क्रिसेंट सोसाइटी तार मैंडेट थिला तेणु आज भी यदि आमे सेवा मनोभावापन्न कोनोसी संस्था को बा संस्थार नजीर नबा प्रथमे आसे इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी और नेचुरली इंडियन रेड इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट सोसाइटी ठीक ता संगे अति निबिड़ भाव में जोड़ी गई सेंट जॉन ये कि तार सेवा मनोवृत्ति सेवा मनोभावापन्न स्वेच्छासेवी खाली भारत रे नुहे पूरा विश्व रे प्रसिद्ध थिला ए वर्ष बोधे मोर जति की माने मने होची मु जस्ट नेट रे देखुतिली ए वर्ष थीम रही की फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी जेते बेले फर्स्ट एड और रोड सेफ्टी कथा आसे सेठी आमो मानकर विशेष करी पुलिस ऑफिसर मानकर जो भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है मु टिके से विषय रे प्रथमे प्रति वर्ष भारत में 1.5 लाख लोग रास्ता दुर्घटना में मृत्युवरण आपण माने जानि कि आश्चर्य है सुप्रीम कोर्ट रे गोटे कमिटी रहिछि
जोटा रोड एक्सीडेंट फैटालिटीज को मॉनिटर करबा पई रहिछि आउ प्रति वर्ष दुई थर एक कमिटी एक्चुअली बसी निर्धारण करे जे प्रकृत रे आमे प्रत्येक राज्य रे यथेष्ट पदक्षेप नीचे कि नहीं ये रास्ता दुर्घटना जनित मृत्यु को आमे रोकिबारे सक्षम नीचे ठीक सेमती हम राज्य स्तर रे माननीय मुख्य शासन सचिव अध्यक्षता रे मीटिंग हम करते कौन देखु गोटे भलो नजीर जने दे बहुत बड़ा सुनामी आस्तिला तमिलनाडु बहुत लोग मरती बात्या होउची लोक मरुछु तमे जति लोक मरिबा हिसाब अनुपात निया जाए जेति की संख्या रे लोक रोड एक्सीडेंट रे मरुछु से तुलना रे अन्य पड़ोसी दैवी दुर्विपाक रे लोक मरती किंतु से जो मरण संख्या अनुपात में जति नबा से अनुसार आमे यथेष्ट गुरुत्व रास्ता दुर्घटना को दोचे की तम माने विशेष कर जो माने कि अच्छा ट्रैफिक रो पिला माने अच्छा ट्रैफिक रो अन्य वरिष्ठ अधिकारी रही छथि गोटे जिंस अछि ताको को गोल्डन आवर ट्रैफिक रे गोल्डन आवर कांसेप्ट गोटे अछि कोन गोल्डन आवर दुर्घटना घटिबा गोटे घंटा भीतर जति रास्ता दुर्घटना रे इंजर्ड हेतिबा व्यक्ति आमे हॉस्पिटल को शिफ्ट करेगा ताहेले तार जीवन बंचेबारे हमर सक्षमता रही खाली किंतु शिफ्ट करले हो जति से जो शिफ्ट करेबा लोक बेसिक फर्स्ट एड जानि छी बेसिक फर्स्ट एड जानि छी आउ ता पाखेरे निकट रे ए फर्स्ट एड किट एटी मते माने विशेष कृतज्ञ मते सेंट जॉन एम्बुलेंस तरफ रो गोटे सेंट जॉन एम्बुलेंस रो फर्स्ट एड किट दिया तेणु जदि ता पाखरे से फर्स्ट एड किट अछि फर्स्ट एड किट अछि ताहेले सीए तार जो प्रथम रेस्पोंड करिवो से रेस्पोंड ताको भलो भाबरे करि परिबो आउ जदि से प्रथम रेस्पॉन्स भलो भाबरे हैला ताले जीवन बंचेबारे आमे सक्षम होबार यथेष्ट संभावना रही आपण माने देखिथिबे एएलएस एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मझिरे आमे बहुत समय आमे एएलएस एम्बुलेंस तो जदि गोटे लोक बहुत गुरुतर भाबरे दुर्घटना ग्रस्त ताको शिफ्ट करिया विषय भीतरे हॉस्पिटल जदि किछि हो एटा एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस बेले बेले आमे व्यवहार करू उदाहरण स्वरूप आपण देखिबे जेते बेले कोविड रे प्रपीड़ित माने बहुत सीवियर भाव रे लोकन को शिफ्ट करा जाउतला एयर एम्बुलेंस दे सेते बेले जो एम्बुलेंस दे की जाय सेटा एएलएस मोर कहिबा କଥା जे ए सब तो आसीबो किंतु प्रथमे जो व्यक्ति से दुर्घटनाग्रस्त बा कोनोसी प्रकार शारीरिक असुस्थता अनुभव करिबा आरंभ होता सेते बेले जो व्यक्ति ता पाखरे पहुंचीबो और सेही व्यक्ति पाखरे यदि फर्स्ट एड जनित साधारण ज्ञान उपलब्ध थिबो ताहेले से निश्चित भाबरे अनेक अंश रे जीवन बंचीबा पई सहायक हेई परिबो एथिरे तिळे मात्र संभावना माने संदेह नाही तेणु ए जो फर्स्ट एड गोटे निश्चित भाबरे लाइफ सेविंग एक्टिविटी कहिले अत्युक्ति होबो नाही रादर इटा गोटे सबुटु इंपोर्टेंट लाइफ सेविंग एक्टिविटी आउ एटा हेल्प save the life and situation from getting worse तेणु प्रकृत कथा कहिले आज जो भले हमें फर्स्ट एड दिवस पालन करूछु गोटे गुरुत्व रही विशेष गुरुत्व रही जे ए जो फर्स्ट एड शिक्षा केते लोकन को मध्य रे हमें परिव्याप्त करि डॉक्टर पट्टनायक कहउतिले जे आज भी सीआरपीएफ रे फर्स्ट एड ट्रेनिंग चली मु मझिरे हमर ब्रांच रेड क्रॉस जो माने हमर कमिश्नरेट पुलिस ब्रांच रो मीटिंग करथिली सेठी हमर रेड क्रॉस सेक्रेटरी मैडम को संगे कथा वार्ता होतिली जे केमिति हमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग को अधिक लोकन को पाखरे इंस्टीट्यूशन पाखरे पहुंचे पारे आउ
आज भी गोटे पवित्र दिवस रे आमे प्रतिज्ञाबद्ध हवा दरकार जे एई जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग को आमे केते परिव्याप्त करि पारे। मु छोटिया प्रपोजल टे भी रखिबी आमे बहुत स्कूल रे आपण माने देई छथि फर्स्ट एड ट्रेनिंग देई छथि। लॉजिकली कहले जदि गोटे स्कूल टे थिबो तार 9th 10th क्लास पिला निश्चित भाव रे फर्स्ट एड ट्रेनिंग जानिबा दरकार। खाली फर्स्ट एड ट्रेनिंग नेला होबनी से स्कूल रे निश्चय ए जेमति फर्स्ट एड बॉक्स के मते प्रदान कले फर्स्ट एड बॉक्स के निश्चय रहिबा दरकार। पिलाटे खेलुथिबो फुटबॉल खेलुथिबो पड़ी गला आंठुरे जखम हैला कोई तो फ्रैक्चर हो सेते बेले से आंठुटा जेते टाइट करी बांधिबा हमर अछि गोटे टर्निकेट बोली गोटे जिंस अछि सेमति जदि करि परिबा अनेक समय ए जो एलिमेंटा आहुरी वर्स होबा माने होबनी सेतिरे आमे निश्चित भाबे सफल। मु गोटे कथा कहिबी विशेष करी भुवनेश्वर कमिश्नरेट भुवनेश्वर और कटक बेतनगर रे कमिश्नरेट पुलिस तरफ रो मध्य मु आपनको एश्योरेंस देबी आमे निश्चित धीरे धीरे जेमति हमर कोविड रो स्थिति इंप्रूव करूची आमे किछटा खोलिबा आरंभ करलेनी आमे फिजिकली किछि जगह रे पहुंची पारुते। तेनु आम पई बेत आगामी दिन रे आज एई पवित्र दिवस पालन उपलक्षे अंगीकार नवा आवश्यक जे आमे आहुरी केमती सेंजन एम्बुलेंस तो बहुत काम करूची किंतु जेते बेले सेंजन एम्बुलेंस माने गोटे मिलित उद्योग करिवो पुलिस पाखरे पुलिस सहित सेते बेले तार रीच तथा पहुंच आहुरी यथेष्ट अधिक होई। तेनु मो कहिबा कथा जे आमे निश्चित से दिगरे प्रचेष्टा करिबा दरकार। मु गोटे अनुरोध करिबी डॉक्टर पट्टनायक को एटी जो पिला माने वॉलंटियर अछंती जो सर मैडम माने अछंती जो माने हमर वर्चुअल प्लेटफॉर्म रे अछंती जे हमर गोटे बड़ दायित्व रहिबा दरकार। एटा को हमें धीरे धीरे स्प्रेड करिबा दरकार। हमें मझे कथा होती जे नेशनल हाईवे गुडा बहुत एक्सीडेंट नेशनल हाईवे कोडरे ढाबा रही ढाबा रे लोक एम्प्लॉय अछि हमें जदी आपण भाबी परंतु बड़ ढाबा रे गोटे फर्स्ट एड बॉक्स सहित गोटे जोडे ढाबार लोकंकु गोटे ट्रेनिंग देई परिबा बे तो सेही लोक जीवन बचेबारे एनएच साइड रोड एक्सीडेंट रे जीवन बचेबारे सब सहायता देई हमें प्रति रोड साइड पुलिस स्टेशन इंपोर्टेंट एनएचएसएच रोड साइड पुलिस स्टेशन जो रही सेठी भी हम पुलिस कर्मचारी को ट्रेनिंग दबार व्यवस्था आरंभ करूछु। तेणु या द्वारा निश्चय भाव रे जो उद्देश्य नहीं एते बड़ उद्देश्य नहीं वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पालन करा जाय छै तार एकमात्र लक्ष्य कोन जीवन बचे जोटा हमर महामहिम राज्यपाल कहिले जीवन बचेला दीटा जिंस गोटे हृदय भितर आसीबो से फीलिंग ता आसीबा दरकार से फीलिंग मनीष भाई हिसाब रे अधिकांश पाखे रही से फीलिंग संगे से ड्राइव संगे जदि हम पाखे से उपकरण रहिबो से ट्रेनिंग रहिबो निश्चित भाव रे किछिटा जीवन बचेबारे हमर ए उद्यम सफल रहे। आज एमती गोटे पवित्र दिवस जहार मुख्य उद्देश्य है जीवन बचे आउ ए वर्ष जो तार तात्पर्य रही फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी एटा आहुरी जो कि हमें देखुचे रास्ता दुर्घटना रे जीवन हानि बड़ी बड़ी चली वे तो आज ए स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड माने एसजेटीए रो माने हमरो सेंजन एम्बुलेंस रो इट विल lead to a giant leap towards reduction in fatalities in road accident. Puni ke Dr. Singh bhi virtual mode re thibe. I express my sincere gratitude to Dr. Singh, Dr. PATTANAIK and sabu Senjan ambulance समस्त कहंती volunteer कर्मचारी को जे आजी से माने ए भलिया गोटे पवित्र दिवस रे मते सुयोग दे छंती इंटरेक्ट करबा को बहुत फिजिकल मीडियम रे और वर्चुअल मीडियम रे और मोर विश्वास कि जहां टिके मोर अभिज्ञता पखाणी लिया और जहां भी मु भाबु जे आगामी दिन में करबी सेटा निश्चित किछिटा जीवन बचेबारे सहायता हो। मु पुणी अभिनंदन जणैबी सेंजन एम्बुलेंस को और ए भलिया गोटे प्रोग्राम आज पवित्र दिवस दिन रे करितबा। धन्यवाद। वंदे उत्तर। Thank you, sir. Thank you very much.
पंडा सार को टिके आमे गोटे शेयर करूछु टिके देखैबो. This is a small token of love to our commissioner sir, Mr. Soumendra Priyadarshi sir. On behalf of World First Aid Day, the Indian Ambulance Association present you sir this small memento. Kindly accept it sir. Now, may I request our Secretary sir, Mr. SANAT PATTANAIK sir. वर्तमान में मो अंदर भी डॉक्टर जसवंत नारायण जेना को से सीपीआर का देखेबे सात बागरे समस्त भाई बहन अच्छा ट्रैकिंग में लाइन देखेबे तापर हम बात करिबा गोटे मॉक ड्रिल अछि जोटा कि बाहर आउटसाइड पिला जो ने ट्रेनिंग हो चाहे से मान को द्वारा प्रदर्शन करे बीजा लाइन अच्छा पंडा सनत सर को टिके लाइन करो. Now I offer my humble submission to Dr. Vanashree Singh, the Director, Indian Ambulance Association, India, and I invite her and welcome her to this Google board. Thank you, DR.NAMITA. Yes, madam. Respected Commissioner in Police, sir, Secretary St. John, officers and volunteers, good afternoon, everybody. First of all, I want to thank all of you for the invitation on the First Aid Day. I also want to thank our Honorable Governor for his this message on the World First Aid Day. As we all know, our St. John Ambulance and the Indian Red Cross Society both are playing auxiliary role to the Government of India, and First Aid is the core activity, one of the core activity of St. John as well as Red Cross. Our today's theme is World First Aid Day is be a first aider hero at school and in our community. So main focus is for the children to educate them, to spread the awareness so they can be a first aider for the community, for the parents and for the teachers and their neighbors as well. So today's theme will revolve around towards the preventive and life-saving skills for a safe school day awareness children on the first day. So many of the school children, even our volunteers are today join on this day. They are the very good first aider, but my request is just spread the awareness on the key activities which you do and you are expert on it. And you can also train your classmates and your even the parents and also your brother and sisters who are younger to you or elder to you. So today's message which we can take at home is everyone can save life. We all should join hand to bring life more safer. Because if you do the first aid on the right time, you can save many lives. Even if the patient has gone to the hospital, before the patient take the first aid, the doctors are at ease to give the treatment and you can save their life easily. So with this, I can conclude without taking your time so that many of them also can share the views. Thank you. Thank you all. Thank you, madam. Thank you very much. And we remember that we will be the prepare the children, school children,
as the first aid hero in their school, and they will work in the community as you tell, and everyone can save life by joining their hands, and they will save the life with the kind collaboration of St. John Ambulance and Indian Red Cross Society. On this auspicious day, as you join, not only you have joined, but you have also encouraged with your encouraging speech. So in this regard, I just want to share a small memento on behalf of St. John Ambulance Association. Virtually, ma'am, kindly acknowledge it. Thank you. Thank you. Thank you, madam. I'm so happy that you have received our request and join in our program and encourage us with your smiling voice and so sweet voice, and we'll take care of this, madam. Thank you very much, ma'am. Now we are having four preparation of 4 demonstration. One is going on here in our St. John Ambulance Association office. We all can see they are doing bandages, ma'am. They are doing bandages. We are having a training program continuing here, and Mr. Ganesh Barik, he is the first aider, first aid lecturer, and Mr. Sushant Patnaik, the assistant commissioner, and also the first aid lecturer. Both of them, they are demonstrating here the bandages. And now I request Mr. Sushant Patnaik. Are you listening to me, Mr. Patnaik? Yes, thank you very much. And here also we're having our volunteers, those who are under training. Now we're having our CP here, Mr. Soumendra Priyadarshi Sir, the Commissioner of Police, Twin City, who has given in very nice and concrete steps what we have to do in our, yes. Mr. Sushant Patnaik, she is continuing with the choking. What happened in case of choking? What we have to do? I think, yes, the first aider, he has to stand behind and he has to give a slap. And he is asking him to continue coughing. Yes, yes, cough, cough, yes, cough, yes. Something is there in his mouth. It has come out. Thank you, Sushant Patnaik. Just have a visual what they are doing, what happened to that person. A person who has received only a certificate, he can't be a first aider unless otherwise he has got some this type of practice in day-to-day life. So while doing this, yes, what she is doing, let us see. She is dealing, that person, he is dealing with the emergency. They rush to the spot, make themselves safe, make the area safe, and make the casualty safe. Yes, now what they are doing? They are doing the evaluating the injured person, his condition, and they examine from head to toe, and the quick assessment has been done by him. Yes, he's doing CPR. He's doing CPR. Yes. Why he is doing that? Can anybody guess? Yes, because when the person present over there, he find that he is unconscious. So he started giving CPR. Yes, what he is doing, whether breathing is normally, whether conscious, whether obviously any bleeding or any observation is there, he is checking. Now you see what he is doing. Yes, breathing is normal. So he has put him in recovery position. Very good. Well done. Well done, volunteers.
So a person, if he is unconscious and breathing is normal, put him in a this recovery position. This is the thing they have done. Yes, what happened? This is another casualty. Oh, he's having fracture. Maybe fracture. Let's see. They have to immediately transport them to the hospital. So what happened? These two persons, they bring the stretcher and they have drilled it, whether that is perfect or not, whether that is usable or not. So they have tested it and they have gone for the blanket, and yes, they have spread over it. Now, oh, there is a fracture in the leg and they are tying it, the triangular bandages in narrow formation, bandages just on the, yes, I think they have given some splint over here. And the both the side, they have given the splint. There is a key word for the fracture treatment on this spot. So they have to be very cautious about that. Don't move him here and there. Utmost care should be taken of, and he should be taken up to the hospital with the help of the ambulance. I think somebody has called up the 102 and the ambulance might have come, and through this stretcher, yes, they are tying the knots so that the person will not be, हिलना नहीं है उनको, बिल्कुल हिलाना नहीं. फ्रैक्चर केस में स्मूथली उनको रखना है और ज्यादा हिलाना नहीं है, because there will be more injury to the fracture person. Now they have tied up with the stretcher. They will carry to the ambulance through drill. Slow march, slowly they will just move him. They are tying the stretcher because he has to be, he has to not to be disturbed so much. That's why, yes, very nice. Now they will off. Yes. Now you see, 1, 2, 3, 4 persons are there with the command up and march on. They have started marching on towards the ambulance. And they are carrying the patient, fractured patient. Transportation is being done very nicely, and they have gone to the ambulance. Ambulance is already called upon and it is standing over here. It is a public place. So many people are watching what the St. John ambulance first aiders and the volunteers are doing. Let's see. Let's have a big clap for them. Well done, boys. मैडम मत सी होनी देखा होनी. They have shifted the patient to the ambulance, and one was sitting over there, yes, in the back side to look after the patient. Very good. And one is going up, yes, to the front seat, and they have transport to the hospital through this ambulance. And this is the place of AG Square traffic, and they are doing the scenario. Now it's a time to see
the very important person demonstration, that is cardiopulmonary resuscitation. मैडम CPR. विजुअल शो होनी. Don't talk, my dear. Don't talk. This is a outside place. I am not showing. You have to watch and wait and watch what they are doing. Dr. Jasavanta Jaina, he is explaining about the CPR. When we are going to give CPR, why we should give? Always there will be a question why. So they are practicing not to a live person, but to a dummy. Through a dummy, he is trying to show how to give CPR, cardiopulmonary resuscitation. First, you have to see when he went there, he rushed to the spot, make himself safe, make the area safe, and make the casualty safe. You see, the bystander are standing just few yards just in front of him, but not so close. आप लोग को audience को हटाना है पहले. Then evaluate the injured person's condition and examine from head to toe. He has already finished this part. Now you see, he continue with the treatment. In treatment, he has to think three things. One is immediate help, number two is appropriate help, and number three is adequate help. And this will continue till the medical aid is available. Now, ensure that the casualty and the bystanders, they are in safe position. Yes, they are in safe position. Now, you see, Mr. Jaswanta Jaina, he has started giving CPR. Why? Because the person is unconscious. Breathing is not normal. So he has started CPR. Look for airways obstruction. He remove any visible item is there or not. Yes. He gave 30 chest compression at least 100 per minute. That means he already gave two rescue breathing through mouth and continue it for 32:2 in appropriate way. He asked for help in the scene and get help from somebody else. So this process will continue till the person breathes normally or he has been taken to the hospital. So assure help that from the audience, and by asking any telephone to the ambulance or any emergency service. Now we'll go to our another scenario, that is Mr. Dr. Bikram Keshwar Mahanti. Now I'll request Dr. Bikram Keshwar Mahanti to start his program. Mr. Mahanti, please unmute yourself. Mr. Mahanti, Bikram Mahanti, please unmute yourself. Unmute yourself, please. Mr. Mahanti, yes, yes. आज वर्ल्ड फर्स्ट एड डे रे आमे समस्त स्वागत जनाउछु. आज दिनटा एथि गुरुत्वपूर्ण जे फर्स्ट एड टेक्निक रे जो गुरुत्वपूर्ण सब विषय सब रही आमे केते प्रचार प्रसार करि परिबा, केते लोक मान पाखरे पहुंचे परिबा, जहा पर कि जो दुर्घटना जनित मृत्यु हार याकु सिग्निफिकेंटली कम कर दे परिबा. एटा हमर लक्ष्य. जाऊ आज बड़ खुशी दिन. आज आम पाखे आम घरे अच्छे आमर लेक्चर बंधु एवं आमर ट्रेनिंग बहुत पार्टिसिपेंट आ छड़ा आमको सपोर्ट देती जो मैंने भी धन्यवाद जनवा. आमर ए गोटे क्लास रे थाइबोन फ्रैक्चर मैनेजमेंट रे गोटे डेमोन्स्ट्रेशन आम ये शो करवा. तेणु धन्यवाद. ये देखा ये
ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ଓରିକ୍ଲିନ୍ विक्रम सर कंपनी रो विक्रम सर तांको विक्रम सर somebody ଆପଣଙ୍କ रूम रे किए जणे टिए मोबाइल ऑफ करंतु समस्त को म्यूट कर देबे ଆପଣଙ୍କ मोबाइल टा केवल ऑन रहू ଆପଣଙ୍କ मोबाइल ऑन रहू आ समस्तंकर ऑफ कर दियंतु ताहले हमें क्लियरली सुनी पारिबो आपनको सुनी पारुछु बहुत सुंदर सुनी पारुछु हाँ समस्त कहि दियंतु वीडियो ऑडियो ऑफ कर देबे हाँ समस्त टिके साइलेंट बसंतु आमे माने आपन को देखि पारुछु वेरी नाइस ओनली डॉक्टर विक्रम महांती विल स्पीक and all other people you just wait and watch yes Vikram sir please start. Vikram sir is going to explain us about the thigh bone fracture, so may I request all my viewers here, please, this is a very important part of our body. As you know, thigh bone is the largest bone of our body. So when it is fractured, what to do? Now, this will be demonstrated by our one of the doctor and first aid lecturer, Dr. Vikram Kishore Mahanti. Yes, Vikram bhai. They found the person with fracture in thigh bone. So they got the improvised triangular bandages and splint, because we have to give support on both the side of the leg, and in between the leg they have to give support through improvised splint. Oh, Dr. Ratika Nath is also there. Yes, both the doctors are there. Both of them are our faculties, senior faculties. They are watching the program and how nicely they are doing. You see, first of all, they have immobilized the part. Immobilized the part means they have put at least 5 to 6 bandages by joining both the legs, and in between some clothes are there, and by the side 2 long splint, which will make the leg to straight way, to remain straight way. There should be no हिलना नहीं, उनको हिलाना नहीं, और ऐसे ही रखना है जैसे कि उसको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, ज्यादा हिलाना नहीं, और उसके साथ उनके जो अदर ऑर्गन है उसके ऊपर भी ऑब्जर्वेशन रखना है. इसलिए सामने तरफ से एक वॉलंटियर बैठे हैं, वो भी देख रहा है क्या हो रहा है, उनका आंखों ठीक है, वो अनकॉन्शियस नहीं हो रहा है तो, और कहीं पर और ज्यादा इंजुरी हो रहा है, हुआ है या क्या, वो सब देख रहा है. Then one person have gone for stretcher. Yes, someone gone for stretcher, and someone gone for blanket. Bring the stretcher and blanket, please. Yes, the 3 person, they have taken the patient on their thigh. Yes, lifting down to the stretcher. Yes. Now 1, 2, 3, 4. The first aiders, they will up the stretcher. Yes, forward march.
Forward march. Now they are carrying the patient to the ambulance. Transportation to the ambulance. Now we'll move to Joda. Sipul Samal, are you there? Sipul Samal. We'll go to Joda. We'll see what happened there. Yes. Dr. Ratika Nath and Dr. Bikram, they are, oh, they came to the hospital, I think so. Very nice. The hospital is very close to their place. So they have taken to the hospital, I think. Thank you, Bikram bhai. And thank you, Ratikant bhai. Thank you very much. Now we'll go to Sipul Samal. Sipul Samal. He is there in Sipul in Joda. In Joda, they are doing so many walks. Today, to observe the World First Aid Day, they are doing so many walks. Now, I'll take you to Joda. Joda. Thank you very much. In the meanwhile, we'll listen from our additional commissioner, sir. Okay. Now I want to request our additional commissioner, sir, to unmute video and bless the children volunteers of St. John Ambulance. Supil Kumar Samal from Joda, may I request you? Supil, are you there? Mr. Samal from Joda, are you there?
नुआखाई जुहार समस्त को देखा गला? Is it visible to all of you? Yes, ma'am. देखाई तो? ओके ओके। पश्चिम ओडिशा रा गणपर्व रे समस्त को बहुत बहुत शुभेच्छा एवं नुआखाई रे जुहार। Thank you, madam. Thank you, ma'am. ओके। सेंट जॉन एम्बुलेंस एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स समस्त तरफ रु धन्यवाद मैडम। ओके अरे नुआखाई पश्चिम ओडिशा रे बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आगे हेलो हाँ होची हाँ आसंतु जॉइन कले तो मु लिंक को देई छी आपन को व्हाट्सएप रे हाँ आपण वीडियो पूरा ऑफ कर दियंतु ऑडियो रे कहंतु टिके देखै दियंतु आगे नाउ विल गो टू जोड़ा रे हमर फर्स्ट एड तरफ रु मिस्टर सुपिल से किछि कार्यक्रम रखिचंती नेटवर्क रो प्रॉब्लम जोगु से देखै पारु नाहंती बट से ट्राई करूचंती हमको देखैबा पई सो round the way we have finished almost 4 to 5 programs in this juncture of time and now the last program will go to Joda from where we'll see what happened and what program they are continuing जदि तांकर नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो थाए ताले हमें देखि परिबानी हमें इठी वाइंड अप करिबा वर्तमान मु अनुरोध करिबी आम मान को गहन रे ट्रैफिक ऑफिस थरे जो माने प्रोग्राम करूथिले से माने फेरी आसिलेनी तो आमे समस्त पुणी एकाठी हबा ए प्लेटफॉर्म रे एवं आम मान को गहन रे अछंती हमरो कमिश्नर एवं सेक्रेटरी डॉक्टर सनत पट्टनायक सर मु तांको अनुरोध करिबी से वर्चुअली जो लोक माने सेठी जॉइन करि पारि नथिले बा आपन को वॉइस सुनि पार नथिले आपन से मानकू
आजिर दिन रे किछि शुभेच्छा वार्ता दियंतु। ओवर टू डॉक्टर सनत पटनायक। नमस्कार नुआखाई जोहार। वर्ल्ड फास्ट एड डे सहित पश्चिम ओडिशार गणतंत्र समस्त नुआखाई जोहार। सेइथरु मु आरंभ करी हमर ए जो वर्ल्ड फास्ट एड डे हमें सेलिब्रेट करछे द्वितीय सप्ताह सेकंड सैटरडे रे सेप्टेम्बर मास सेकंड सैटरडे रे सेलिब्रेट करछे। एथरो एटा 11 तारिख रे पडिची। हमें हमर प्रथम मोटो जे आमे केमती बेसी रु बेसी लोकन को पाखरे पहुंचीबा, हमर सेवा को पहुंची परिबा, लोकन को अवेयर करै परिबा, सेटा हमर ऑब्जेक्टिव। आमे आम सहित आज थिले हमर वर्चुअल रे थिले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सारंकर मेसेज, तापरे आम सहित थिले हमर डायरेक्टर डॉक्टर बनश्री मैडम, आम सहित थिले फिजिकली थिले भुवनेश्वर कटक रे सीपी सौमित्री सर आई प्रोग्राम अति मीडिया भाई माने समस्त उपस्थित थिले। हमर प्रोग्राम बहुत भलो हला जोटा कि हम फिजिकली देखै पालुनी, आपण माने को देखै पालुनी। आ मु भी मु जानिनी वेदर आपण माने देखिले कि नहीं देखि पालेनी। हमरो एठी कार्यक्रम हला सीपीआर विषय को हला, गोटे डेमोन्स्ट्रेशन भी देखाला। सो हमरो ए जो ग्रुप रे अछंती जो माने उपस्थित अछंती सेमानन को मोर अनुरोध जे बेसी कार्यक्रम हो लोकन को पाखरे हम पहुंचबा। हमरो जेमती मु कहउतली हमरो भिन्न जगह रे ट्रेनिंग चालीची। डॉक्टर नमिता मैडम जे ई वर्चुअल रे बहुत सुंदर भाबरे कोऑर्डिनेट करथले, मु तो नथिली जानि पालिनी, सुंदर भाबरे कोऑर्डिनेट करथले। अब हम मीटिंग टाइम थु अधिक पर्यंत गला। विक्रम बाबू भी थिले, डॉक्टर विक्रम हमरो डॉक्टर जसवंत नारायण जेना, हमरो सुशांत बाबू, हमरो ट्रेनिंग अफसर समस्त उपस्थित रही कि प्रोग्राम टा बहुत सक्सेसफुल करेले। आ सेत पे बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने हमर लेक्चरर माने जो माने प्रेजेंट अछंती। हम सहित मु जानिनी फेदर फिजिकली हमर केपी मिश्र सर अछंती कि नहीं थिले कि नहीं जानिनी। समस्त को मोर सेंट जॉन एम्बुलेंस समस्त को मोर धन्यवाद। एडिशनल कमिश्नर सर को भी सेठी समस्त खोजुतले। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त उपस्थित रहले, प्रोग्राम टाको सुंदर भाबे कले। वर्तमान नमिता मैडम ताकर प्रोग्राम टाको कंटिन्यू करेबे। धन्यवाद। Again, since 2000, World First Aid Day has been organized by the Red Cross and Red Crescent Society. Together, they raise public awareness and how first aid can save life, both in everyday and crisis situation. So all that things we have already listened. So first aid counts as any emergency treatment or medical assistance given to an injured or unwell person before normal medical aid is arrived. But in everyday situation, what we see, the first aid could be as simple as accidentally cutting yourself from a sharp kitchen knife or falling down from a staircase and getting hurt. So all these crisis situation, this could be as drastic as giving medical aid to people in war countries, like and you're hit by natural disaster like tsunami or your cyclone or earthquake, so many things. So whatever you are in the world, first aid is essential for all human life. So this truly makes it an important global event, lending to its name World First Aid Day. Yes, we have observed with the theme, as you know, the first aid and the road safety, already CP has mentioned, and Prathamika Chikitsa or Sadak Suraksha. So in that day, we know that India is the busiest country, and in this world, in terms of road traffic, we are having more than, it is in the South Asian country, it is the 4th largest country, having more car or vehicles registered. Then Indian road network spanning over 5 million kilometers, carried over about 90% of the country's passenger traffic, about 60% of the goods every day. So with the rapid increase in the number of cars and the mercilessly congested Indian roads,
road safety has tuned into a factor of utmost importance for the country's citizens. We know the number of road accidents. Mr. Sagar Patnaik, please. So the number of road accidents across India amounts that is 449,000 in 2019. About 70% of the accident involve young Indians. That is my point to say you all. Why it is important, first it is important for us. As our Madam Banashree Madam has already told what to do, what not to do. And the country has about 1% of the global vehicle population. Only about 1%. But you see the traffic. Mr. Sagar. So the country has about only 1% of the global vehicle population, but it accounted 6% of the world road traffic accident. So number of death occurs 151,000. Accident death occur 421,000. Traffic incident death occurs 181,000, and road accident death is 151,000. So you see, in this juncture of time, what we have to do? We have to learn, we have to know first aid, not only to save ourselves, but also to help others to be in safe. What I want to conclude with Banashree Madam, what he said that be the first aider hero, be the first aid hero in the school and the community. Everyone can save life, not only the first aider, you also can live. So what we have to do? We all have to join together hands with Indian Red Cross and Indian Ambulance and get the first aid skill training. Very, very small training, but very useful training. So I went up here with wishing you all on this World First Aid Day that to become a first aider at your home, at your school, and be the first person to save the life of a person. And that's all about this World First Aid Day. And I'm really thank you to all of you for giving your cooperation by joining your hands on a Google platform since 11:30 to till the time and encouraging us. I, on behalf of our Commissioner Cum Secretary, St. John Ambulance, Odisha, Dr. Sanat Kumar Patnaik, and on behalf of our Additional Commissioner, Dr. K.P. MISHRA, and on behalf of all the office staff and all the faculty members, those who have rendered first aid training in the public and arranged the scenario, from all of you, I extend a heartfelt thanks from the core of my heart to all of you. And we will again join in another program very shortly, maybe through online, maybe through offline, but your cooperation is very much required. And thanks to all of you. And again, we'll meet. Thank you all. Now, I request our Secretary, sir, will present, sir, participation certificate, e-certificate to all those who have registered with us and who have present in this virtual meeting, sir. If you will give consent, we'll prepare and we'll send through the mail ID to them. Definitely. Yes, definitely. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you. So our secretary has given consent. So we'll give you the certificate, and virtually we'll meet again also if you want so, because we have already tested here how to do the first aid training virtually. And rightly, our Dr. Jaswanta Narayan Jena, Dr. Bikram Kesari Mohanty, Dr. Ratikant Ram, all of them, Mr. Sushant Patnaik, all of them, they have shown, they have presented their things so nicely. And I have given you the running commentary so that you will not upset, because Braja, one of the volunteer Braja told me, Madam, I could not able to see because you are watching through your small mobile. So you may not be able to see the entire thing, but they have shown us through our visual and we have seen, and I have also explained you how to do that. Again, we can also meet and we can also learn this first aid. And I'm really thankful to
Dr. Pramod Mahapatra, the training coordinator of Indian Ambulance Association, who is also with us. And I'm also grateful to you, sir, for giving us an opportunity to mix with the public in a single platform and explain all about first aid and observe the World First Aid Day. Thank you all. May I now request to get permission from our SANAT PATTANAIK sir to close up this program. Dr. Patnaik sir. Actually, sir is busy. Oh, Dr. Patnaik sir, could you allow me to close the program here itself? This online program? Already he allowed. Dr. Patnaik sir, yes. So I'm going to stop the recording.